तो हमने तो हमने हमारे प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमने ओंकार के बारे में सीखा। जैसे ओंकार में अकार उकार मकार रहते हैं। अकार क्रिएशन को सिंबलाइज करती है, उकार स्थिति को सिंबलाइज करती है, मकार लय स्थिति को सिंबलाइज करती है। मतलब जब आपके अंदर से जब ओम करके आवाज आती है तो आ के साथ ही शुरू होता है, तो वही क्रिएशन का स्टार्ट है। और आप अपने ब्रीथ को सस्टेन करते हैं तो वो उकार में है, और माँ के साथ क्लोज होता है, साउंड आना भी क्लोज होता है। तो अकार उकार मकार तीनों को मिला के हमारा ओंकार बनता है। वही सृष्टि स्थिति और लया है। और देखिए, ओंकार से पहले क्या था? मौन था। ओंकार के बाद क्या है? मौन है। तो ये मौन जो है ये चौथा स्थिति है, जिसको तुरीया स्थिति भी बोला जाता है। ये परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन है। परमात्मा इज दैट स्टेट वेयर भगवान इज इट इज देयर बिफोर द क्रिएशन। जो क्रिएशन से पहले था परमात्मा की स्थिति है। मतलब सिर्फ भगवान ही पूरी दुनिया में अपने आप में वे आनंद ले रहे हैं। तो उसको हम उस स्टेट को हम उस पर्टिकुलरली उस स्टेट को हम परमात्मा की स्थिति करके कहते हैं। तो वो परमात्मा का स्थिति है। और वहां से आगे बढ़ के हम परमेश्वर स्वामी बनते हैं। जब उन्हें सृष्टि करने की इच्छा उनमें पैदा होती है तब वे परमेश्वर की स्थिति में आते हैं। तो हम कह रहे थे कि ओंकार परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखिए परमात्मा हैं, वहां से उन्हें सृष्टि करने की आलोचना की सोच आई है। तो वहां से वे उन्होंने सृष्टि किया, स्थितिकार भी बने, उसके बाद लयकार भी हुए, और अंत तो गत्वा उन्होंने वापस पूरा प्रलय से सृष्टि को वापस अपने में ले लिया। तो परमात्मा थे, परमात्मा से आगे बढ़ के सृष्टि परमेश्वर बने, परमेश्वर से सृष्टि स्थिति लया तीनों बने, और उसके बाद एंड में फिर से सारा क्लोज हो गया, फिर से परमात्मा की स्थिति में आ गया। तो ये पूरा यहाँ पे ओंकार है। और ये जो परमात्मा है वो सृष्टि स्थिति लय से पहले भी है, बाद में भी है। तो वो तुरीय स्थिति है। तो हम इन चारों स्थितियों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह लास्ट टाइम हमने बात किया है। अब मैंने जस्ट वो क्या बोलते हैं उसको, हमने जस्ट एक बार रिवाइज किया मैंने अभी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो मूर्ति पूजा, आज हम मूर्ति पूजा के बारे में और तीर्थ और क्षेत्रों के बारे में हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। विग्रहाराधना या विग्रह बोलते हैं संस्कृत में। तो विग्रह का नाम क्या, क्यों विग्रह बोला जाता है? मूर्ति को विग्रह क्यों बोला जाता है? विग्रह मतलब विशेषेण ग्रहति इति विग्रह। विशेषेण ग्रहति मतलब विशेष रूप से दैव शक्ति का वो ग्रहण करती है, लेती है अपने आप में, तो वह विग्रह है। विशेष विशेषेण और विशेष रूप से मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है। अब बहुत बहुत सारे लोग, पर्टिकुलरली जो बाकी रिलीजियंस के लोग हैं, वो हमें बहुत बार ये बोलते रहते हैं कि अरे आप लोग मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति पूजा करते हो। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है, तो आप भी तो कोई रिप्रेजेंटेशन रखते हो। क्रिश्चियंस क्रॉस रिप्रेजेंटेशन रखते हैं अपने 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 यहाँ पे, और मुस्लिम लोग तो वो एक सेमी सर्कल और एक स्टार रखते हैं ना, तो एक चांद और एक सितारा रहता है उनका भी। तो everywhere they have some representation through which they are trying to see the divinity. Okay, संस्कृत में विग्रह का और एक नाम है लिंग। लिंग का ये नहीं कि सिर्फ वो शिवलिंग है। लिंग मीन्स ए रिप्रेजेंटेशन। ओके, परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम करके हमारे बहुत स्तोत्र भी हैं। मतलब यहाँ पे ये आदि शंकराचार्य लिखे हैं, परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। मतलब यहाँ पे लिंग का अर्थ होता है एक रिप्रेजेंटेशन, एक 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 इंडिकेशन, एक रिप्रेजेंटेशन, चिन्ह। लिंग माने चिन्ह।
because that's the exact Hindi word for it, चिह्न। तो यहाँ पे वो एक संकेत करती है। अब देखिए हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो, एक है हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है, एक और एक क्षेत्र यात्रा या तीर्थ यात्रा, वहां पे हमें जाना होता है और वहां पे जाके हम एक मूर्ति को देखते हैं, वहां पे पूछते हैं। मैंने पहले भी हमने इन डिटेल मूर्ति पूजा के बारे में हमने बात कर ली, तो यहाँ पे मैं बहुत कम ही बोलूंगा। यहाँ ये परमात्मा, हम वहां पे मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, भगवान को मूर्ति में देखकर पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें समझना होगा। तो हम अब देखिए, अब आपको ये डाउट आ सकती है कि अरे भाई, जब सारा विश्व में, मैं कल तक यही बोल रहा था कि सारा विश्व में परमात्मा ही है, सारा विश्व में परमात्मा है, सारा, मैं तो 1000 बार बोल चुका हूँ उस बात को। तो जब परमात्मा हर जगह है तो मुझे तीर्थ यात्रा क्यों करना है, मुझे एक क्षेत्र में क्यों जाना है, जाने से मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। तो मगर हमारे शास्त्र में कहते हैं कि हर साल आपको एक क्षेत्र का दर्शन करना है, कम से कम एक क्षेत्र का तो आप दर्शन करना ही है, नहीं तो कम से कम 3-4 साल में एक बार आपको एक बड़ा क्षेत्र जाके दर्शन करना है। मगर वो उन दिनों में था जब इतनी ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब मगर अब क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है ट्रैवल के, हम लोगों को, हम इस जनरेशन में जीते, हमें ये रूल ही रखना चाहिए अपने लाइफ में कि हर साल मैं तीर्थ यात्रा करूंगा या करूंगी, कम से कम एक क्षेत्र को तो हम जाएंगे, अगर हो सके तो हर 6 महीने में हम एक तीर्थ यात्रा करेंगे, एक क्षेत्र को जाएंगे। और देखिए, ये तीर्थ यात्रा कोई विहार यात्रा नहीं है कि हम वहां पे जाएंगे 3-4 दिन के लिए रुकेंगे, वो 3-4 दिन में एक ही दर्शन करेंगे, बाकी सब हम वहां पे यहाँ घूमेंगे, उधर घूमेंगे, सेल्फी लेंगे, ये नहीं। हमें तीर्थ यात्रा बोले तो वहां पे भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट करने में समय लगाना है, यह तीर्थ यात्रा का मूल सूत्र है। अब आप पूछ सकते हैं भाई, परमात्मा तो हर जगह है, तो ये तीर्थ यात्रा हमें क्यों करना है। देखिए, अगर आप घर में साधना कर रहे हैं और उस घर में आप प्रॉपर वैदिक आचार फॉलो करते हुए साधना कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मल रिजल्ट आएगा उस साधना से। फॉर एग्जाम्पल, कोई जप या तप कर रहा है तो वो घर को बहुत क्लीन रख रहे हैं, स्नान करने के बाद, स्नान मतलब आप मंत्र पूरित नहाते हैं, मतलब जब आप नहाते हैं तो लास्ट बिट ऑफ वाटर जो आप अपने ऊपर डालेंगे, लास्ट मग ऑफ वाटर, तब आप मंत्र बोलेंगे कि गंगे जी यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा कुछ मंत्र बोल के आप नहाते, तब वो स्नान बनता है। और जैसे आप स्नान करने के बाद आप कोई बेड को नहीं छुएंगे, आप कोई सिर्फ यू विल गो एंड वेयर क्लोथ्स व्हिच you put them to dry one day before. I mean, for example, if I have to do puja today, I'll take a bath yesterday, and immediately after taking bath, I'll take some clothes. I'll wash those clothes also, and then I'll go and dry them up. And I'll put it for drying, and then I'll not touch those clothes at all. And next day after I take bath, I'll take those clothes from the place where I have kept them. So I keep them in a separate place near God's place, wherever if I have chance, I'll put them there. Then I'll go and wear those clothes again, and then I'll do puja. Or some people, what they do is they'll put some silk clothes, ताकि उसे आप multiple times use कर सकते हैं without doing it every day. तो आपको after you take a bath, you should not touch anything else, and you should directly go there, wear those clothes, and then sit and perform puja. अगर आप ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं, then if somebody is passing away, you follow those 12 days, you follow the menstrual isolation जो बताया जाता है, क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंस है। I don't know if I will be able to cover it, but I can suggest a book called Menstruation Through Cultures करके, एक बहुत बड़ा very nice book है। Otherwise you can follow the work of a lady called Sinu Joseph, वो एक
by birth she was a Christian, but then she realized the energy fields and all that women have, and she explains those concepts in a wonderful way. So you can always listen to her on YouTube or something. It's the lady's name is Sinu Joseph. She actually went and did a lot of research on Buddhama and the energy cycles that happen in women, and she presents the research also in a wonderful way. So so you can so if you do all of this, then you get a normal, जो आप जब कर रहे हैं जिसका आपको नॉर्मल रिजल्ट मिलना चाहिए, वो रिजल्ट आपको मिलेगा. अगर आप साधना नजदीकी टेम्पल में जाके कर रहे हैं तो ये इनटू 10 टाइम्स रिजल्ट आपको देगा. ओके, आप जस्ट ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप एक काम करेंगे, हर वीकेंड यू विल गो, यू टेक योर जपमाला विथ यू, wear properly washed clothes, and again you are not supposed to wear any wet clothes when you are doing all this, so you wear a very properly dried Indian traditional clothing, and you go, you sit, and then you do your japa, you do your Lalita Sahasra, Vishnu Sahasranama, your Devi Mala Stotra, anything. You go and sit in front of a deity in a temple normally, and you do it, you will get it 10 times more. Now if you go near a river, and a river के पास temple भी है, तो you go sit beside the river and you do it, you will get it 100 times. If you go to a kshetra and do it, like for example आप वाराणसी गए हैं, तो आप विश्वेश्वर जी के दर्शन किए, एंड देन वहीं पे टेम्पल में थोड़ा बगल में जाके आप अपना जप तप कर रहे हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, उतना ज्यादा मिलेगा. अगर आप अब मान के चलिए आप ऋषिकेश गए हैं, वहां बैठकर आप साधना कर रहे हैं, आप काशी गए हैं, वाराणसी गए हैं, वहां पे बैठकर आप साधना कर रहे हैं, आप इंदौर गए हैं, उज्जैन में कर रहे हैं, या आप ओंकारेश्वर में कर रहे हैं, कहीं पे भी आप श्रीरंगन जाके वहां पे कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी का अपलिफ्ट आपको मिलता है वो ह्यूज है. तो क्यों ह्यूज है, अब इसे हमें समझना है. देखिए देखिए, you all I'll tell you an example here. You all, we are all seeing sunlight, right? We are living in summer, so right now, so first thing is if you want to see God, you have to come out of dvandva sthiti, means good bad, mera para apna paraya, sukh dukh, profit loss, likingness and love and hatred. ये सारे द्वंद्व स्थितियों से आपको ऊपर उठना है, तभी आप भगवान को देख सकते हैं. अब देखिए, अब ऐसा है कि सनलाइट इज सनलाइट एवरीवेयर. Namaste, sir. Sorry, I'm late today. Forgot to see the time. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. तो सी, जब तक आप इसमें पड़े हैं, जब तक आप इन द्वंद्वों के बीच में पड़े हैं, तब तक आप भगवान को देख नहीं सकते. तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, and if you really want to become a big bhakta of Bhagavan, you have to read the 12th chapter of Bhagavad Gita and the shlokas from 13th to 20th. Advesta sarvabhutanam maitrah karuna evacha करके वो शुरू होते हैं. I'll do those shlokas one day in our sessions only. So अब देखिए, only then you will get the gods, only then you will be able to see God. See, getting God's grace is different, seeing God is different. If you want to see God, you will have to raise above all of this, even if they are there in us, even if this is द्वंद्व है हमारे मन में, तब भी भगवान की ग्रेस तो ग्रेस ही है, you will always get it. Okay, now imagine the sunlight, it is falling on a stone. Can it do anything? It is falling on a stone. वो सिर्फ वो स्टोन हीट होगा, वो उससे कुछ ज्यादा आपको कोई और फायदा नहीं मिलेगा. मगर अगर आप, if you have a what do you say, if you have a magnifying glass, and if the sunlight is falling on that magnifying glass, and if you are putting a paper under it, what will happen after some time? The paper will catch fire, right? See, now the sunlight is the same. One is a stone
which is of no, which is not able to use that sunlight. One is a magnifying glass that is actually magnifying it and using it, right? So the sunlight is the same, based on who is receiving it, it is changing, right? Now, similarly, while God is present everywhere, there are some points on the earth where जहां पे ये परमात्मा का प्रेजेंस मैग्निफाई होके, मल्टीप्लाई होके हमें दिख रहा है। उन प्लेसेस को हम तीर्थ क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र बोलते हैं, जहां पे हमें जाना है। ठीक है, भगवान हर जगह है, बट देयर आर सम प्लेसेस वेयर यू कैन गेट हिम इजीली, जहां पे हमारे पाप बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं। ऐसे कुछ प्लेसेस हैं और वहां पे हमें जाना है। और ये तीर्थ क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक है स्वयं व्यक्त, मतलब आप सुनते होंगे यहाँ पे ये स्वयंभू शिवलिंग है, ये स्वयंभू देवी माँ का, मतलब अपने आप से माता जी वहां पे प्रकट हुई हैं। You must have heard of such places, right? So first type of them are called as Swayambhu Kshetra. Second type of them are called as the Kshetras which great Siddhas have come and established. The last one is things that have that जो मानवों ने जाके किया है। ये तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले पहले हम ये देखते हैं कि और एक चीज, क्योंकि मैंने आपको ये तीर्थ और क्षेत्र के बारे में बताया, तो इसमें फिर से हमारे समाज में एक प्रॉब्लम है कि हम whatever we catch we call it as the most and the greatest thing. फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए दो बंदे काशी गए हैं और एक बंदे ने दशाश्वमेध घाट में स्नान किया, दूसरा ने 80 घाट में स्नान किया। अब ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं कि मैंने बढ़िया घाट में किया तो मैंने बढ़िया घाट। दैट्स रॉन्ग। हमें माइंड में ये रखना है। अगेन दिस इज अ वंडरफुल लाइन टोल्ड बाय Samvedan Sharmugaru, who is a great pravachanakarta in Telugu. As I told, I'm actually doing all of this from his book only. तो वे यहाँ पे बताते हैं कि सबसे प्रथम चीज हमें ये माइंड में रखना है कि हम दोनों गंगा स्नान ही कर रहे हैं और हम दोनों के पाप जा रहे हैं बाहर, हम दोनों अच्छे मार्ग के अंदर जा रहे हैं। ये माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए भगवान गंगा जी हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारी उपासना जो है, उस परमात्मा के बारे में हम जो उपासना करते हैं वो एक घाट जैसा है। तो द पॉइंट इज आपको देखिए गंगा जी तो बहती रहती है, मगर आपको अगर जाकर गंगा जी में नहाना है तो आपको एक घाट रहने की आवश्यकता है। मतलब भगवान हमेशा हर जगह हैं, मगर अगर आपको उस भगवत शक्ति का दर्शन करना है तो आपको एक उपासना पद्धति लेनी है और उसी में आपको आगे बढ़कर उपासना करना ही है। ठीक है, अब देखिए अब देखिए मान के चलिए आप कहीं उत्तराखंड में आप ट्रैवल कर रहे हैं और गाइड ने आपको दिखाया, देखिए हम एक पहाड़ के ऊपर है, नीचे से गंगा जी बह रही हैं। तो आपको लगा कि नहीं मुझे गंगा नहाना है, तो यू विल नॉट जंप फ्रॉम दैट माउंटेन इनटू गंगा जी, राइट? यू वोंट डू दैट, राइट? क्यों? अगर ऐसा करेंगे तो पुण्य के बारे में बाद में हम खुद चले जाएंगे, लाइक लाइफ विल नॉट बी देयर इन अस ओनली, राइट? इसीलिए ऐसे ही भगवान के पास स्नेहा जी हैज अ क्वेश्चन। स्नेहा जी, I'll finish this and I'll answer your question. Okay? I'll finish what I'm saying and then I'll try to answer your question, Sneha ji. Yeah, there is slight difference, किंचित भेद है इन सारी चीजों के बीच में, but yeah, I'll explain that. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्रह्मा जी, क्षमा करें, ये जो भगवान हैं, ये
हमें तीर्थों में आसानी से मिलते हैं क्योंकि वहां पे ये शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत मैग्निफाइड है। ठीक है, अब इफ आई गो बैक टू माय प्रीवियस एग्जांपल, सन वही था, पेपर वही थी, मगर आपने वो पेपर को ले जाके अगर आपने एक बड़ा पत्थर पर रखा तो पेपर पेपर जला नहीं है, मगर आप लाके एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखे तो वो पेपर जल गया। तो ये हमें यह बात बताती है कि sun is the same, Bhagavad Kripa is the same, but then in the places where you can get it in a much more concentrated way, it will kill away all our sins and it will push us towards God. ये हमें समझना है, and this is why Bhagwan has come in few places as तीर्थास. Okay, very nice. अब देखिए, अब देखिए और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हम अभी स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेस के साथ और एक चीज होती है टाइम। तो स्पेस इज वन थिंग वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट तीर्थ क्षेत्रस, आई टॉक अबाउट स्पेस, आई गेट बैक टू तीर्थ क्षेत्रस, बट लुक एट टाइम, टाइम आल्सो कालो ही भगवान कर्ता, and we all look at Bhagavan as a Kala Swarupa also. So Bhagavan is in the form of time also. Then why are we having some things as good muhurat and some things as bad muhurat? Some things as good for some days, some things as good, some things as bad. Why are we calling all of this? Again, the first thing that we really need to understand is there is no bad time. There are good times. Every time is a good time to do some specific activity. Okay, for example, देखिए, you all must be knowing this one word called tithi, right? Have you heard of the word called tithi? Can anyone tell me what is tithi? पाड्यमी विद्या तदिया जो बोलते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये पाड्यमी विद्या ये सब कुछ ये सब तिथियां कहा जाता है। या ये सब तो कहाँ से तिथि को ले रहे हैं? हम तिथि को चंद्रमा की मूवमेंट्स के अनुसार ले रहे हैं। ओके, तिथि को हम ले रहे हैं चंद्रमा की मूवमेंट्स के अनुसार। चंद्रमा will take 27 days to 1 month to complete one revolution around the earth and around itself also. Hence, when Chandrama moves from Amavasya to Amavasya, some people take it as a month, means immediately the next day after Amavasya or the new moon day, some people start their month, and some people start their month immediately after Paurnima. So again, so these are called as tithis. So Patyami, Vidya, Tadiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami, Ashtami, Navami, Dashami, Ekadashi, Dwadasi, Trayodasi, Chaturdasi, Paurnima or Amavasya. If the moon is increasing in size, then it is called as Shukla Paksha. If the moon is decreasing in size, मतलब पौर्णिमा से अमावस्या, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष. Krishna means darkness. Since the darkness is increasing, we call it as a Krishna Paksha and Shukla Paksha. Any doubts on this till here? Any doubts on Tithi? No, sir. Very good. So that's about Tithis. And then Parva. Parva is 15 days of time. Okay, I told you, right? Sukla Paksha and Krishna Paksha. And then we have Nakshatras. So we have 27 Nakshatras. Every day we will have one Nakshatra, which is impacting us. Now please remember, none of these Tithis are good, none of them are bad. But every Tithi, every Nakshatra, every Parva, they are good for some things. And the science which tells which is good for what, it is called as Hinduism, Hindu Dharma. It has the science to tell all of this. Okay, so first thing is remember that much. And now see, again, because I know some of you want to go ahead and propagate this knowledge to others also.
So the question that we all need to ask ourselves here again is, I mean, why are we saying so? But we are still calling something as a muhurta. For shadi vyah, we are using a muhurt. For new housewarming ceremony, we are using a muhurt and all that. So why is this happening? Simple. अभी तो क्या है? We are in summer, right? अभी कोई अपना हल लेकर किसान जा रहा है, and if he is digging the land and if he is bowing the seeds, will he get any result out of it? No, right? He will not get any result out of it because there are no rains, and he has to do all that activity immediately after rains, right? So in the physical world itself, we are seeing that when the temperature is in a certain way, when the time is in a certain way, when the season is a certain season, you get benefits if you are doing some specific activities only, right? For example, in Andhra, the place where I come from, we have huge mirchi plantations, and they after the mirchi is harvested, they will put it under the sun so that its properties actually increase. Now I can't go in a rainy season and put it under the sun, right? It won't work that way. I'll have to do that in the summertime only, right? So similarly, when we have to do, see, for example, in every season, you have to do some activity. When you do some activity in a season, you are getting getting the results. Similarly, when you do one activity in the tithi, in the time, then again you get good results. Now I told you that this is a science. How is this a science? To give you a very normal example, मान के चलिए, see, to tell that all cloths are the same, you don't really need a lot of knowledge. Because see, anywhere, every cloth is to cover your body only. So all cloths are the same. But if you have really studied your classes well, you will really know which cloth is useful in which season, right? Yes or no? Whether the cloth is good, how long it will stay, is it is Yes, it is sir. is it good on your body, is it light on your body? You should see this when women are doing saree shopping. The number of things that they know, you don't even think that they know till you see them talking about them. So you need knowledge to distinguish, and to distinguish you need knowledge, you need science to distinguish, and that science is available with Hinduism. Okay. So this is the space and time time wala thing that I told you. So any questions on this, on the time aspect Sir, of? sir, I would like to add something to it. Please go आपने ahead. जो बोल हाँ, आपने जो बोला ना उसमें अचर और चर करके मुहूर्त होते हैं, मतलब समटाइम्स अ गुड फॉर ट्रैवलिंग, मतलब वो जो मुहूर्त हम लोग निकालते हैं या जो हम लोग मतलब ऑस्पिशियस टाइम दैट यू से वो Yes, कुछ होता है कि व्हेन इट इज गुड फॉर ट्रैवलिंग यू शुड स्टार्ट ऑन दिस टाइम, एंड अगर आपको कुछ ऐसा स्टेबिलिटी के लिए कुछ चाहिए तो यू शुड डू इट ऑन दिस टाइम. ऑब्वियसली वो उस उससे भी आप कर सकते हैं, मतलब समथिंग इज गुड फॉर हिलने डुलने के लिए और कुछ स्टेबिलिटी के लिए ऐसा. very good, very good. Um, very good. So again, see, Snehalji, again, as you mentioned also, right? There is no good muhurt or bad muhurt. There is a good muhurt for something. There is a bad muhurt for something. But the time Yes, as such, does not have good or bad. The point is you are taking them in a certain way to do a certain activity. Bas yehi hai. And now after this, now I have told you about the space. Tomorrow I'll get into I'll get into the different types of kshetras. I told you, right? What are Swayambhu kshetras? What are Siddha Pratishtita kshetras? And what are Manava Pratishtita kshetras? We will look at all these three types and how they are important and how we should go. Again, there are multiple rules when you go to a kshetra, because how you behave there, what you do there, what are your do's, what are your don'ts,
I'll try to touch as many things as possible so that we are all aware of what things are supposed to be there. Okay. And now I'll come to Snehalji's question. I am sorry, I'm sorry, for some reason this video got stopped. Okay, so now I will go and talk about upasana, aradhana, and puja. Right. So what is? Sir, one doubt, sir. One Yes. doubt. Tell. सर फिर टाइम तो हमेशा अच्छा ही रहता है ना सर, लेकिन फिर ये हम ये क्यों बोलते हैं तिथि फलाना तिथि अच्छा नहीं है, फलाना तिथि ठीक वही बोल रहा हूँ। देखिए, फलाना ही इस काम के लिए अच्छा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ वक्त ऐसे हैं जो दुर्मुहूर्त कहा जाता है, कोई राहु काल कहा जाता है। अगर आपको ठीक ठाक उपासना आती है तो कुछ लोग उस राहु काल में जाके देवी माँ की आराधना करते हैं और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी पाते हैं। मगर नॉर्मल चीजें करने के लिए, लौकिक चीजें करने के लिए राहु काल अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन एवरी सैटरडे many people in Andhra Pradesh, we don't travel from sunrise for 1.5 hours. Will not start any travel. For example, मुझे Saturday कहीं पे जाना है. If I have to imagine, I have to catch a 9 o'clock flight, and I can start at home at 6 o'clock, but I won't start at home at 6 o'clock. I'll start at 5 o'clock itself, still when the darkness is there. Because उसको हम कहते हैं दुर्मुहूर्ता, which means that 1 hour 30 minutes is not good to start any new activity. मगर ऐसा नहीं कि वो पूजा के लिए अच्छा नहीं है, नहीं, वो आप पूजा कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर वो 1.5 hour is not good for you to start a travel or to start anything new. So what we do is we try to avoid that. Either we leave before 6 o'clock or we leave after 7:30, imagining that 6 o'clock is the sunrise time. So the point is, the time is not bad. The time is normal only, but it is not good for me to start a new thing. Are you getting it? Similarly, for example, बहुत सारे लोग षष्ठी के दिन कुछ नया शुरू नहीं करते, but षष्ठी is very good to start studying. Okay, and some people don't start something on Ashtami and Navami, but then Krishna ji was born on Ashtami, Sri Ram ji was born on Navami. So for some activities, for some pujas and all, these are good. But if you want to get into a new house, probably you might not want to do it on an Ashtami. So this is how, and for each of these, you have different times that are specified. For example, I'll just give you a very small example. Don't take me otherwise that I'm using this sort of examples. For a Brahmin, for him to start education, he has to get to start Vedic education, they'll do an Upanayana Samskar. Janeyu ka dharan karwate hain. That is, in Brahmin households, they will search for an extremely good muhurta for that, because that is going to depend. That is going to decide the entire life trajectory of the person. So for that, they will search, and they will always try to get a very good muhurta to get it done. And in some cultures, in some cultures, particularly, they take a stronger muhurta for the Garbhadana, which is colloquially called as first night, than the marriage muhurta itself, because the importance of that muhurta that will decide the goodness of the kids who are going to come out of that marriage. So it depends. It depends. People because these are all, again, at the end of the day, all these are energies, and as Snehalji said, some are chara muhurtas, some are acharas, sthira muhurtas, where you can't do some things. So the idea is that, okay, I'll give you another example here. Jagan Mohan ji, see, पानी तो पानी है, मगर कहीं पे पानी में फ्लोरीन मिक्स हुआ है, कहीं पे पानी में ज्यादा क्लोरीन मिक्स हो गया है, कहीं पे मगर वो अच्छा बुरा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, if I am having a swimming pool, I need water which has got a lot of chlorine in it, but वो मैं पी नहीं सकता.
पीने के लिए मुझे उस फ्लोरीन रहित पानी को पकड़ना है। कहीं पे फ्लोरीन ज्यादा है तो वहां पे फ्लोरोसिस आ जाती है, मगर वो फ्लोरीन के पानी से मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। सो टाइम इज ऑल्सो लाइक दैट, टाइम इज it's flowing, but if you want to start something, or if you want to stop something, if you want to restart something, for all of that you need a good a time that suits it, and hence we call it as a good time for that activity. And over the generations we somehow said, "Arey, nahi, we just categorized it as good time and bad time." No, the time is constant. For your activity what is good, for your activity what is bad, that's the whole point. Okay. Okay, sir. Okay. So if there are no further questions, I'll come to Snehalji's question. Upasana, puja, aradhana. Okay. Puja is what you do on a daily basis. So what do you do in puja? Exactly, if I'll have to tell what is done in a puja, पूजा का अर्थ होता है आई एम शोइंग माय रिस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड, मैं ऑनर कर रहा हूँ भगवान को, ये मतलब होता है। एंड और आपके पूजा में होता क्या है नॉर्मली, इफ यू डू, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज षोडशोपचार पूजा। व्हाटएवर पूजा यू डू, the pujari will make you do this, or if you yourself are doing it also, you will do all these steps. So what is the first step? In the first step you will do desha kala sankirtana, matlab you will talk about the whole world around you. You will say Kali Yuge, Pradhamapade, Jambudvipe, Bharatavarshe, Bharatakhande, and then Aswin Vartamana Vyava, and then if you are taking a reference of Meru Parvat, you will say Mero Dakshina Digbhage. If you take Sri Shaila as the reference, you will say Sri Shailasya Vayuvya Digbhage. Whatever it is, you will tell the direction in which you are there, and then Dakshina, let's say Isanya Pradesh, and between which rivers you are there, Ganga, Godavari, Yoh, Madhye Dese, like this you will say. And then Asmin Vartamana Vyavaharika Chandramanena means in the current day, this is the year. I mean, this is out. We are going with Chandramana, means we are measuring time with the movement of Chandraji, Chandramanena. Whatever is the year, Parabhava, this year's name is Parabhava Nama Samvatsar. Then you will do the Tithi, you will tell the day. For example, if you have to talk about today is Dwadashi. So Dwadashyam Shubhadidau Vasaraha. So what is that? So Guru Vasare, like that you will talk. And then you will tell your name, and then you will tell what you want, and then you will say to whomever God. For example, if you are doing the puja of Mataji, you will say Lalita Devata Prityartham. If you are doing Lalita Mata's puja, you will say Lalita Devata Prityartham Shodasa Upachara Puja Miham Karishyami. I do the Shodasa Upachara Puja. 16 upacharas is what are there in the puja. So the first one, what you do is you recall all the rivers into the small patra in which you put the water in Ganga, Jamuna, and you purify the water that you have, and from then you will do an avahana, you will do a dhyana of the god. Means अगर आप ललिता जी की पूजा कर रहे हैं तो आप ललिता जी की फोटो जो रखते हैं उसको देख के अपने मन में ललिता जी का एक चित्र बनाते हैं, मतलब कैसे बैठी हैं, उनके हाथ में क्या क्या है, उसके कौन से हाथ हमारे लिए ये जो ब्लेसिंग वाला सिंबल जो कौन से हाथ से दिख रही है, हाउ इज शी सीटेड, हाउ आर हर आईज, वो सब कुछ आप एक बार देखते हैं। उसके बहुत सारे श्लोक होते हैं, अरुणां करुणा तरंगिताक्षी, लाइक दैट यू विल टेल दैट श्लोका, यू विल रिमेंबर द मूर्ति इनसाइड, एंड देन यू विल आवाहना करते हैं आप बोलते हैं कि हे ललिता माँ, till I finish this puja, please come and stay here. तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, आवाहना करते हैं, ध्यानम करते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है तो पहले से आप क्या करते हैं, you will ask them to sit. तो आफ्टर आवाहना you will provide them with a seat. तो उसको सिंहासन देना बोलते हैं। उसके बाद you will give them water. तो first to wash their hands and legs. So this happens in our house also, right? Someone has traveled long, they'll say I'll go to washroom and come out, so we'll wash their feet first. So पादयोः पाद्यम, उसके बाद आप थोड़ा जल ग्रहण कीजिए, हस्तियो अर्घ्यम आचमनीयम, एंड उसके बाद you will do the snanam. Then once snanam is done, you will give them new clothes, right? Imagine Lalita Ma has come to your house, then you will give her new clothes, you will give her nice beautiful ornaments for her to wear. So you will give her vastram,
You'll and if you are able to feel all of this mentally when you're doing the puja, the result that you are going to get is multifold. So you will do that. Then you will say you will give her yajna and then you will give her obviously they have dressed up very well. What would you do? They have put their ornaments also. Then you will give them a perfume, right? So similarly, you will, in those days it was chandanam, so they used to put the chandan on their bodies. So you will do that, and then you will start doing the puja. You will take first you will see for a male, if you are doing the puja for a male deity, you will start from the feet and you will go to the head. And if you are doing the puja for a female deity, you will start with their head and you will go to the feet. So you will say, okay, your head is like this, your eyes are like this, and like this you will be doing the puja till the feet. Okay. After that, you will take 108 names of that devata and you will do the puja. So what are those 108 names? You have 27 stars. There are 4 padams for every star. So 27 into 4 is 108. So when you are doing puja, anyone is born in these 108 padas only, means 27 stars, 4 padas for each star. So 27 into 4, 108. So you do puja with 108 names so that everyone in this world is happy and you also get whatever you desire for. So that you do. After that, you put nice incense and you make them smell it. So that's dhupam. Then, as I told you before, every god, every form of god is represented as a light. So you do deepam. Then you give them, because Mata has come to your home, so you'll cook a lot for her, right? You will cook the choicest dishes and give her. So that's naivedyam. Um, and after that, after having a huge meal, what do? You take a pan, right? So you will give her tambulam. After that, you will do arati, because Ma has to leave again, right? After that, you will do the mantra pushpam, where you will say, we both are the same, but and please help me realize that. After that, you will do a pradakshina and say, Mata, please take away all my sins. That's called as Atma Pradakshina Namaskara. After which you again prostrate at her feet. That's a dandavat pranam that we give her, and then we say, Mata, since I know you have got a lot of other activities also, so please keep coming whenever I call you, and then we will let Mataji go. So this is a complete ritual. So your puja is a ritual. So here you have materials. Which are those materials? You have flowers, you have deepam, you have naivedya, you have arati, you have mantra. So what are you doing here? You are showing respect, you are showing devotion, you are honoring the devata, and you are giving us, you are following a proper sequence. तो इसको पूजा बोलते हैं. Any doubts on puja? Any doubts? No doubts on No, puja. no, no, sir. Yeah, now we will move to what is Aradhana. Now you have been doing puja every day. So every day you are inviting Mataji to your house, you are doing puja, and now you have made it like a dhara. How do you explain a dhara? Any one of you who has poured oil into a cooking pan, right? It won't break. It will follow in a straight line, and when you want to stop it, you lift the oil back, and then you will quickly rub off the tip so that the dhara stops. So like this, on a daily basis, when you are doing this puja, the dhara of your devotion has formed. Okay, and so constantly now, even when your puja is done, Mata is coming into your mind slowly, and you are now starting to sing. You start humming her songs. You start humming her. So this is the next level actually. So slowly, for some part of the time, your mind is going through it, and and constantly you are remembering Mataji. Constantly you are loving her. The next time you are going to a temple, you are seeing how well Mataji was decorated, what all they put, and you'll start thinking of how can I do these decorations at home? Can I do this? And slowly your thoughts also start changing, and sometimes I mean, it's not that you will conquer everything, but sometimes you feel like staying away from some things because you think, अरे नहीं माताजी को ये अच्छा नहीं लगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूँ. So that is Aradhana. So Aradhana is continuous. You are now constantly feeling there.
presence, and you are contemplating also consistently. Now, the next one is upasana, upa-asana. You are now sitting very close to the deity. So what happens is in puja, you might do it one day, you might not do it one day. In Aradhana, you are remembering, but when the next level you are going, that's called upasana in Sanskrit. So upasana is, I'm giving you the meaning of the Sanskrit word only. I don't know if there is a separate Hindi meaning for it. Now what happens is, now you have, see, you started with puja, you grew into Aradhana, and from this now you started during your Aradhana phase, you started learning more about Devi Ma. Now you start, what you start doing is, now you are living a God oriented life. You're literally sitting near her throughout your life. For example, you start doing dhyana. आप आंखें बंद करके you are thinking of, okay, how would Mata's Manidriva look like? Where does she sit? Okay, I saw that Mata's picture for 5 minutes. Now, if I close my eyes, can I remember every detail there? Okay, and then you start doing japa, and then slowly you will get to know, when you reach to this phase, even at the upasana level, even the deity will start speaking back to you, or they'll start giving you those indications. For example, okay, मैं अभी जो 9 दिन नवरात्रि आ रही है, मैं वहां पे व्रत रखूंगा, या मैं दान करूंगा उस टाइम पे, नहीं तो मैं घर में जागरण करवाऊंगा या सत्संग करवाऊंगा. देखिए, ये दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं आप, ये माता जी की संतुष्टि के लिए करना शुरू कर देते हैं आप. एंड यू विल स्टार्ट डूइंग जब व्हेन नोबडी इज, you start feeling like, if people are there, array, they are making me waste my time, yeah, let everybody go, I can sit around, quickly take my mala, start doing my japa, start doing my dhyana. Why I mean, you will not be, I mean, you'll be talking to everyone, but your interest will be like, array, yaar, leave me alone, yaar. You practically wait for everybody in the home to get out and get lost, so that I get those 3 hours, I'll do my upasana. This is like a whole pattern. So, and then when you are doing an upasana, you will not miss it for anything else. So that becomes your numero priority in life. Even if you'll have to miss it, that will be like दिल पे पत्थर रख के आपको एक दिन पूजा ना करना हो, एक दिन आपको जप ना करना. फॉर एग्जाम्पल, घर में किसी का देहांत हो गया, तो आपको उन दिनों में ये वैदिक कर्म करना नहीं चाहिए. तो then also you will be feeling like, कब वो 10th day आएगा where I'll come back, and or when the 10 days will be over, so that on the 11th day I can go back and do my upasana. In these 10 days also, you'll be constantly taking Mata's name. So this is the, and then you'll pick up all these food restrictions, you'll pick up all these sleep restrictions. I mean, you prefer sleeping on, you prefer doing a shitala snana, means cold water bath. You prefer doing a bhutala shayana, sleeping on the floor in the sense, you take a mat or something. You'll not use a mattress or something, but you'll use a small mat, a thick blanket, and you will put in that and sleeping. Why? Because you are now slowly dissociating yourself from the world, and you are walking closer and closer towards Mata, or I mean Mata, Shiva, Krishna, Keshava, anyone. So I'm just taking Mata as an example. So this is now the level where you are becoming God oriented in your life, and that is where upasana actually starts. And people who become very strong upasakas, by the end of their lives, you will be not end of their lives, if they do it for 10-15 years, you will be seeing that glow in their face, which tells us that they will have a very calming presence when they come and sit. You feel like your worries are also going away. So all that will come. And see, in puja, you might want to take pictures and share it with everyone. During Aradhana phase, you are like, हाँ करेंगे, but okay. And when it comes to Upasana phase, you are like, I really don't care what the world is thinking about me. I just want to go and sit and sit near Mataji and do this. So this is the progression between puja, Aradhana, and Upasana. Okay. Very well explained. Thank you so much. Yeah, very. It was very interesting and didn't know about it. So, sir, that means Upasana is the highest level, right?
Upasana is basically upa asana. Upa means close. Asana is, right, place to sit. So you are close to God now. Upasana is close to God. And upasaka. So till they find siddhi, they are upasakas only. And once you get siddhi, siddhi means the goddess will start talking. The God will start talking. I mean, you are in a constant touch now between both. And sometimes the goddess herself sends some forces. Particularly, this happens with Devi Aradhana, where I know of a person to whom there is a person whom Mataji sent as to protect him. Okay, invisibly. So that level also you will go. Upasana is like that's not very easy, but at the same time, once you are there, the chances of falling back are very less. But remember, whether you are doing puja, whether you are doing aradhana, whether you are doing upasana, there is always this risk where we fall back from that place to a lower plane because हमारे जो गुण हैं, हमारे जो weaknesses हैं, all of them will always be काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो हमारी वासना में है, they will try to bring us. So at any level we can still fall down, but then the level differs, and we should be very careful of all of this right from day one till the last breath of our life. Okay, I'm sorry, I forgot to tell that before. Okay. फिर हम स्टेज में पहुंच जाते हैं, जैसे आराधना या उपासना स्टेज में पहुंच जाते हैं, फिर ये फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट स्टेज में जो करते हैं पूजा का जो षोडशोपचार जो करते हैं, तो फिर उसका जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? No. Every activity will reward you. Okay. बस अब देखिए आप उस आराधना के लेवल में अपने मन को ट्रेन कर पा रहे हैं कि या नहीं? नहीं. Okay. जी. All you, it is see. All again one more thing. ऐसा नहीं कि आप हर दिन पूजा ही करो, वहीं से आराधना में जाओ, वहीं से उपासना में जाओ. फॉर एग्जाम्पल किसी अब मान के चलिए मेरा मन है हर दिन आई डोंट वांट टू डू पूजा, मैं पूजा में बैठता हूँ तो मन नहीं लगता. इंस्टेड व्हाट आई डू इज आई गो एंड क्लीन भगवान्स मंदिर एवरी डे एंड देन आई सी हिम. I see Shiva, I'll go clean Shiva Mandir every day. I look at Shiva, I start feeling the connect. Okay. And then I keep doing his name. I keep chanting and in Namasmarana, it will take you into all of these phases. Okay, so you and I keep doing the Namasmarana. So slowly I come to a state where if I don't go to the temple and do the cleaning, my mind is now poking me and telling me ki nahi yaar, today you did not go, and it is guilt tripping me. Okay, so at that level I have entered aradhana. I did not go through the puja route, I went through the seva route. For some others they might start with a japa. Okay, and after some time they are doing the mantra so many times every day that the mantra is constantly coming into their mind. They have slowly reached the aradhana phase. But once you reach the upasana phase, you yourself will start feeling like doing all those activities associated with the god or goddess. अब आप अपने आप से व्रत रखते हैं, and the beauty here is the goddess or the god, whoever is your इष्ट देवता, they will start communicating with you. I mean, ऐसा नहीं कि आके आपके बाजू में बैठ के बोलेंगे, but कोई आके आपको बताएगा कि अरे you know what, देवी माँ के नवरात्रि आ रहे हैं ना, तो आपको नवरात्रि ऐसा करना है, आपको मन में ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रखना है, खाने पे ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रखना है, कोई ना कोई आके आपको बोलेगा, and then you will start following that will lead to the next step, and then you will start doing vrat also, you will start doing I mean you will start doing every other activity there. So all of this once at an upasana level, everything will merge. Slowly but steadily, suddenly a guru might come into your life, they will lead you. So all of that will happen. So only thing is that we will have to take the first step and we'll have to train our mind to constantly think of the God or constantly take the names. From there, it's autopilot. वो अपने आप से हो जाएगा. But the only part is, initially when we are doing it right, we will have to be very, very careful and push ourselves towards it. Okay.
ओके सर, थैंक यू सर, बहुत Thank you. अच्छा समझाया सर। तो पूजा इज भक्ति मार्ग क्या? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो आराधना भी भक्ति मार्ग ही है, पूजा भी भक्ति मार्ग ही है। अब ज्ञान और योग मार्गों में जो लोग करते हैं वो कंप्लीटली अलग चीजें हैं। ओके, ज्ञान में in the Gyan Marg, people will start questioning who they are. People will start questioning what is real, what is unreal, who is Paramatma. That's all brain work. Okay, and in Yog Marg, they will say that since God is there within us, using our body only, we will reach God. They will be going inside and all that stuff. That's Yog Marg. Normally, a puja path karna, vrat rakhna, thinking about God, taking God's name multiple times, all of these are predominantly Bhakti Margas. Bhakti Marg ke hi, what do you say, uh, um, different activities. Okay. Okay, sir. Okay. Good then, Ji. That's all that I have for today. I'll close the call here. And if you have any other questions, I'm fine to take. Otherwise, we'll close the call here now. Thank you. Okay, I'll take silence as a no. Questions from my side. Thank Yes, you. yes. Thank you. Okay, then we will do. थैंक यू सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। Thank you. We'll meet tomorrow. Thank you. थैंक यू सर। Thank you.